अपनी अपनी बुक्स को मेरे साथ खोल लीजिए। Another type of boy who does not try is the very bright boy who has always done his school work without effort and who has never learned what real application is. He supposes that he can float through college with as little effort as he did through school. I sometimes think that the bright boy who has always depended on his ability to get things quickly is the most pitiable object among all our failing students. For it is almost a tragedy to see all of this keenness going to waste, and to feel that the entire opportunity which the college has to offer is passed up because of a too receptive mind. The cure for this sort of thing is again not easy, for it involves an entire change of attitude and the forming of a completely new set of habits. No one can do this but the boy himself. All that the rest of us can do is to point out what is the matter. The question of health, both physical and mental, is always one of the reasons for failure. If an adequate health service is available in the college and if proper cooperation exists between the teaching staff and the office of the college doctor, an immense number of failure can be avoided. And what is just as important, the reason for inability to do satisfactory college work can be clearly understood by the boy, his parents, and the college authorities. In the case of poor academic work, the reason for which is not apparent. It is my custom always to ask the student to undergo a thorough physical examination. It is surprising to find out in how large a percentage of such cases the university physician finds an adequate reason for the difficulty. Tuberculosis, bad tonsils, sleeping sickness, poor digestion, various forms of mental and nervous difficulty have been brought to light by the doctor during the past few months, to the unspeakable relief of the student and the enlightenment of the faculty. Occasionally, one meets an old-fashioned person like the father who told me a few months ago that although we had arranged to have his son's tonsils removed without expense, he would not consent to the operation. He asserted that God put those tonsils in his son's throat for some good purpose, and that he would not stand for their removal, since the boy was absorbing too much poison to permit proper application to his college work. We had to ask him to go home. Of course, such cases are rare, but it is necessary to keep constantly in mind the simple fact that there is no substitute for health, and that, however such a man may know, it is not of much value unless he possesses the physical vigor to bring it to bear on the world's problem.
दो प्रॉब्लम्स, दो कॉजेज़ राइटर हमारे साथ मज़ीद शेयर करता है। और आज की जो फर्स्ट कॉज है वो है ब्राइट बॉय। एक ऐसी क्लास, एक ऐसा ग्रुप भी हमारे पास आता है कॉलेज में जिनके मार्क्स मैट्रिक में बहुत अच्छे होते हैं। 1900 कुछ लोगों के 1000 से भी ज़्यादा होते हैं। सो ऐसे बच्चे जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है चूँकि बहुत थोड़ी सी एफर्ट के साथ उन्होंने मैट्रिक में इतने शानदार मार्क्स ले लिए हैं, अब उन्हें कोई ख़ास दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, भाई दोबारा फिर वो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो गुजारा चल जाएगा। ऐसा नहीं होता। सो ऐसे बच्चे अकॉर्डिंग टू राइटर सबसे ज़्यादा काबिल रहम, काबिल तरस हैं, क्योंकि जो काम कर सकता है और नहीं करता और फिर फेल होता है, तो ऐसे बच्चों के लिए सिर्फ हम कह सकते हैं जी बड़ा अफसोस हुआ। ठीक है, अब इसको कैसे, इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है? राइटर कहता है कि इस मसले का हल किसी के पास नहीं है। हम सिर्फ बता सकते हैं एज अ टीचर कि मसला क्या है, मामला क्या है। मसला बच्चे ने खुद हल करना है। अपने रवैये में तब्दीली लाए और अपनी आदत में तब्दीली लेकर आए, तो ही उसका मसला हल हो सकता है। आप आज का जो दूसरा प्रॉब्लम है, या दूसरी जो कॉज राइटर हमारे साथ शेयर करता है, वो है मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ। एक सेहतमंद जो जिस्म है वो ही हेल्प कर सकता है आपके माइंड को अच्छे तरीके से काम करने के लिए, या हेल्दी तौर पर काम करने के लिए। जब तक जिस्म बीमार है, तकलीफ़ में है, काम नहीं किया जा सकता, ख़ास तौर पर स्टडी नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। राइटर कहता है कि जैसे ही कोई बच्चा उनके कॉलेज में एडमिशन के लिए आता, तो वो सबसे पहले उसको ये कहते कि जाएं और जाकर अपना जो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन है, अपना तिबी मुआयना करवा के आएँ कि आपको कोई मसला तो नहीं, ताकि उस मसले को हल किया जा सके। इसी तरह से पेरेंट, टीचर और कॉलेज या स्कूल का जो डॉक्टर है, ये एक ट्रायंगल बनाते हैं। बच्चे के लर्निंग प्रोसेस में, सीखने में इन तीनों का बहुत रोल होता है। डॉक्टर बताता है कि क्या मसला है, तो जो टीचर है उससे अवेयर होता है और उसके मसले के मुताबिक उसको डील करने की कोशिश करता है। और अगर पेरेंट्स जो है वो कोऑपरेट नहीं करते, तो टीचर और डॉक्टर की मेहनत दोनों की बेकार चली जाती है। राइटर कहता है कि यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ने जो है वो काफ़ी वक्त लगाया और बहुत सारे मसाइल निकाले। किसी को टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम था, किसी के जो है वो बुखार था, किसी को कोई डाइजेशन का प्रॉब्लम है, किसी को टीबी है, किसी को कोई मसला है। तो इससे क्या हुआ कि टीचर्स को बहुत हेल्प मिली कि अगर एक बच्चा नहीं काम कर रहा तो उसको जो है वो देखा जाए कि क्यों नहीं कर रहा, और फिर उसकी जो फिज़िकल कंडीशन है उसको एग्जामिन करते हुए और उसको फिर ट्रीट किया जाए, ताकि वो बेहतर तौर पर अपनी स्टडीज़ को देख सके। समटाइम्स ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो कोऑपरेट नहीं करते। अब यहाँ पर राइटर एक वाक़या हमारे साथ शेयर करता है। कहता है कि एक लड़का था जिसके गले में टॉन्सिल्स थे और वो मुसलसल जहर अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा था, जज़्ब कर रहा था। उसके फादर को बुलाया गया और उसे बताया गया कि आपका जो बेटा है उसके गले में टॉन्सिल्स हैं, हम ऑपरेशन कर देंगे और बग़ैर किसी खर्चे के कर देंगे। तो फादर का जो रिएक्शन है वो बड़ा अजीबोगरीब सा था, शायद हम या कोई भी शख्स एक्सपेक्ट नहीं करता। उसने कहा कि अगर मेरे बेटे के गले में टॉन्सिल्स हैं तो खुदा ने किसी मकसद के लिए रखे हैं, भाई इनको रिमूव नहीं करवाना हमने। अब ये जब पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करेंगे तो टीचर या डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। फिर राइटर कहता है कि उस बच्चे को हमने घर भिजवा दिया। इसी तरह से जो है वो आप बहुत सारे मसाइल अपने गिर्द देखते हैं। तो जब भी खुदा न खास्ता अगर आप में से किसी को कोई फ़िज़िकल इशू है, तो कहीं पर भी एडमिशन लेने से पहले आप अपनी सेहत को देखें। सबसे पहले आप अपने मसाइल का हल निकालें, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और फिर स्टडीज़ की तरफ जाएं।
वरना आप जब आप कॉलेज का या स्कूल का या यूनिवर्सिटी का काम नहीं कर पा रहे तो आप ज़हनी तौर पर भी तनाव का शिकार होंगे। तो ना सिर्फ आपका जिस्म तकलीफ़ में है, आपका जहन भी तकलीफ़ में होगा। इसी तरह से राइटर कहता है कि जो हेल्थ है उसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, और जो शख्स बीमार है वही उसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकता है। सो आज हमने 2 कॉजेज़ देखी। फर्स्ट थी ब्राइट बॉय और सेकंड थी हेल्थ प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको आज का लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली कॉजेज़ के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे।